मित्रों, जो आदिवासी लेखक सम्मेलन हमारा चल रहा, आदरणीय अर्जुन देवचारण जी हैं हमारे बीच में। साहित्य अकादमी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबार जी हैं और साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबार जी, प्रोफेसर अर्जुन देवचारण जी और डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी। मैं साहित्य अकादमी के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अर्जुन देवचारण जी का अंगवस्त्रम और साहित्य अकादमी की पुस्तकें भेंट कर स्वागत करें। मैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे आज के अतिथि का स्वागत करें। Namaskar and good afternoon to all of you. Respected Professor Chandrasekhar Kambarji, President Sahitya Akademi, esteemed Dr. Arjun Dev ji, distinguished Rajasthani writer, playwright and acting chairman of National School of Drama, all the playwrights assembled here and friends. I am glad to welcome all of you for this discussion on present scenario of playwriting. Friends, drama in India has had a rich and glorious tradition. Come to think of it, India has been producing plays for the past 2000 years or so and has no comparison except maybe for Greeks and to some extent Chinese. Indian drama and theatre is not supposed to assume they are something belonging to the past and as pieces of relic based on the observation. In fact, Indian drama has been evolving all the time, observing all the latest innovations and techniques over a period of time. That is one of the many reasons for the successful and uninterrupted production of Indian plays in all the languages for a very long time. Again, this is not to be counted only in the written languages, but all the plays and theatre in oral traditions and unwritten languages
including tribal languages, should be taken into account. When one does that, the amount of play that are being produced and have been produced is staggering and mind-boggling to say the least. The development, growth and branching of theatre in different parts of the country in different times reflect the cultural atmosphere in those regions and offer a fascinating study, like diversification of theatre in South India into different forms, street plays, satirical performances, temple plays, etc., or the assimilation of Perso styles in the northern parts. It is true of all art forms, including literature, and not merely drama. But then, it is not all bed of roses for Indian theatre, either now or in the past 7 or 8 decades. In fact, a host of problems exist for the playwriting, especially on the picture of incentives available for playwrights. Beyond a point, playwriting is being judged on the success of stage plays, whether one likes or not. This is the reality. The reality is there is a widely prevalent perception that drama is first and foremost meant to be staged, and unless there is professional stage and encouraging box office prospect, there is no incentive to the playwright. There is plenty of truth in those perceptions, and that is one of the reasons why not many youngsters are coming forward to theatre. Ravaging and penetrating technological innovations across the spectrum of entertainment industry is one of the reasons why this is so. A variety of other factors related to these have to be addressed and immediately. For, like many places, the Theatre of India too played many different roles in the society, educating, creating awareness, entertainment, etc. The pre- and post-independence Indian theatre and drama offer glimpses of these. In the period leading to independence, drama, especially street plays, galvanized the masses, united for a greater purpose despite a large number of inherent contradictions in the societal constructs. In the early period of independent India, theatre was used to effectively educate people and increase their awareness about the country itself. The Bharatanga Mahotsav by the National School of Drama has just been held, and it is heartening to note the warm reception that Mahotsav has received. But the challenge is to replicate such success in all the languages of the country and throughout the year. I am sure Dr. Charanji will agree with me. The contemporary Indian drama has unearthed and produced enormous talent across the country, especially young playwrights who have brought in innovation, fresh sparks of creativity, ability to fusion technology and tradition and dynamism. The central question is about the role plays have to play in society in 21st century, which is essentially a digital world. If television ushered in the decline in interest in drama among masses, digital technology has widened the rift further. I am not an expert in this particular field, but I am glad to be able to continue the discussion on playwriting. This is the third successive year we have introduced as a part of our Festival of Letters. I hope in the coming years also, not only in the festival, even in other our language-wise activities also, we will start to discuss about the playwriting, the present scenario of playwriting, and we have already requested all our conveners to start play reading sessions. That is what we have already started in Delhi. We had a 3-4 play reading session very successfully. I request many of our conveners are here. They may start the play reading sessions in their respective languages, so that it will be a kind of encouragement to the playwrights. Not only in the, of course, NSD will take care of the staging the plays, but we should take care of the playwriting thing. We can have more and more workshops also for how to write the plays, etc. Only in Sanskrit language we are conducting every year
For last 4-5 years, we have started for the children how to write a play in Sanskrit language. But in other major languages also, I request all the conveners who are assembled here with these few words. Once again, I welcome the chief guest of this afternoon, Dr. Arjun Dev Charanji and Professor Chandrasekhar Kambarji. Both are stalwarts in particularly theatre field. They are as a director, also as a playwright, and both have received Sangeet Natak Akademi Award for playwriting and of course Sahitya Akademi Award. When such people are there, we will get a good guidance how to proceed further in this particular genre of writing. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के श्रीनिवास जी। जैसा कि सचिव महोदय ने बताया कि साहित्य अकादमी ने साहित्य उत्सव के दौरान पिछले 3 वर्षों से इस कार्यक्रम को संचालित करना शुरू किया और ये तीसरा संस्करण है। आपने बताया कि अध्यक्ष और अब कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप साहित्य अकादमी के राजस्थानी परामर्श मंडल के सम्मानित संयोजक रहे। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, के बिड़ला फाउंडेशन का बिहारी पुरस्कार, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी सहित अनेक संस्थाओं के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। हम बहुत ही आदर के साथ उद्घाटन वक्तव्य के लिए मुख्य अतिथि आदरणीय अर्जुन देव चारण जी से अनुरोध करते हैं। आदरणीय कंबार साहब, आदरणीय राव साहब और इस सभागार में उपस्थित सभी रंग सामाजिक नाट्य साहित्य का, नाट्य लेखन का वर्तमान परिदृश्य, ये विषय दिखने में बहुत सीधा सरल दिखता है और उस सरलता में हम ये भी कर सकते हैं कि एक सूची प्रस्तुत कर दें कि ये अभी नाटक लिखे गए या उन नाटकों के बारे में छोटी छोटी टिप्पणियां कर दी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय में थोड़ा सा एक पेच है। वो नाटक साहित्य नहीं कह रहा है या कि नाटक लेखन नहीं कह रहा है, वो नाट्य लेखन कह रहा है। और हमारी भारतीय परंपरा में नाट्य शास्त्र जब नाट्य की बात करता है तो वो हमेशा उसके साथ प्रयोग की बात करता है, प्रस्तुति। नाट्य शास्त्र में नाटक एक अलग चैप्टर के रूप में है। इसलिए भारतीय परंपरा में नाटक और नाट्य ये 2 अलग चीजें हैं। इस प्ले शब्द में भी खेलने का भाव छुपा हुआ है और आश्चर्यजनक बात यह है कि भारतीय परंपरा का जो आधार ग्रंथ है नाट्य का, नाट्य शास्त्र, उसमें नाट्य की उत्पत्ति को ही खेल से जोड़ा गया और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मनुष्यों की बेहतरी के लिए देवता प्रयासरत है। आप अगर भारतीय वाङ्मय को उठाकर देखें तो आपको लगेगा कि सब जगह मनुष्य देवता के प्रति विनीत भाव से खड़ा है। लेकिन ये नाट्य, ये जो क्षेत्र है वहां देवता खड़े हैं
और विनती कर रहे हैं ब्रह्मा से कि कुछ ऐसा क्रीडनीयक शब्द है, क्रीड़ा से जुड़ा हुआ यानी खेल से जुड़ा हुआ, कोई एक ऐसा खेल आप रचें जो सार्ववर्णिक हो, यानी जो सभी वर्णों के लिए उपयोगी हो। क्योंकि भारतीय परंपरा में वेदों को पढ़ने की या सुनने की एक बहुत बड़ी संख्या में जो एक वर्ग था, एक वर्ण था, मनाही थी। तो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ऐसा एक 5वां वेद रचे। नाट्य को देखिए आप किस ऊंचाई पे प्रतिष्ठित किया गया है। वो कह रहा है 5वां वेद है। आप 5वां वेद रचिए जिसे सभी वर्ण सुन सकें, पढ़ सकें, जिसका हिस्सा बन सके। और तब इंद्र आदि देवताओं की विनती पर ब्रह्मा 4 वेदों से 4 चीजें लेते हुए एक, उसे वो कहते हैं नाट्य वेद। ऋग्वेद से पाठ्य लिया। हम जो नाट्य के क्षेत्र में सक्रिय लोग हैं वो शब्दों को लेकर कुछ ज्यादा ही सचेत रहते हैं। इसलिए जब हम पाठ्य कहते हैं तो हम पाठ नहीं कह रहे हैं, उसके अंतर को समझना पड़ेगा। ऋग्वेद से पाठ्य लिया, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय लिया, अथर्ववेद से रस, और उन्होंने 5वां वेद बनाया जिसे उन्होंने कहा ये नाट्य वेद है। और उसके साथ उन्होंने कहा मैं इतिहास सहित नाट्य वेद की रचना करता हूं। एक ऐसी विधा